that is substance. Now what is substance? You know what is substance? It's a philosophical criteria of knowing. So every stream has their own way of looking at things, right? Philosopher has this way because knowledge can only see through these two things. Substance है या quality है. So substance is basically or rather sorry in itself means what? Not dependent on anything, right? So substance is that essential thing. Like for example, ऐसे देखो आप, ये सब्सटेंस है, राइट? ये चेंज होगा क्या? ये देखो वो फिजिकली आपको नहीं दिखता. जैसे मैंने बोला ना, यू आर द सेम पर्सन tomorrow, also same person, 10 years after down the line also same person. So what is changing and what is remaining? Something is changing and something is remaining same, because even change you are able to gauge the change only because something is remaining same. Otherwise how would you compare? You know this, you cannot, whenever you do comparison and difference, like any example you might have gone through of bring out the difference between the two as a type of question anytime in the life. Difference question, can you tell me any example of difference that some difference can be brought in? Difference between x and y, tell me any example, and I will prove that because they are same only you are able to differ them. Tell me any example. हाँ नहीं वो तो ठीक है, एकदम ही philosophical है. Cat and dog, okay, they are saying, जैसे normally people say don't mix up apples and oranges. They don't say don't mix up apples and cows. Why? Both are something common. He is saying, like for example, very good, cat and dog. Why to compare on cat and dog? Because when you compare on something similar. Just let's tell me the difference between cat and dog, we'll understand. Tell me. Okay, both male, for example, for sake of simplicity. Male cat, male dog. Tell me the difference. कुछ डिफरेंस नहीं होता ना, सेम है दोनों. आप मुझे डिफरेंस बताओ. आपको कैट्स एंड डॉग में डिफरेंस नहीं, इतना फिलोसफी पढ़ ली है क्या? एक ये म्याओ करता है, ये भाव करता है, इसमें क्या इतना सोचना है? कहाँ फिलोसफी करते हैं आप इतना? ओके, ये टाइगर वाली जमात से है, ये कोई और जगह जमात से, मुझे नहीं पता कौन सा है, जो भी होगा, है ना? टाइगर की मौसी है ये, और ये छोटा होता है, ये बड़ा होता है, सिंपल है, स्मॉल ऑन एन एवरेज, दिस बिग. और बताओ. कार्निवोरस ओनली. नेक्स्ट, वो सेम बता रहे हैं आप, सेम है दोनों कार्निवोरस ही, दोनों फाड़ के खाते हैं, किसी को भी फाड़ के, दोनों खाते हैं चूहे को. So this difference you got in because there is something same. What is same? Otherwise, okay, and like for example, if you instead of dog, like both are animals, both are petable animals, both are carnivore, like that. Now here instead of this, if I say cat and table, how would you differentiate between them? Differentiate. वेरी गुड, वही आने वाला था, और कोई आएगा नहीं. लिविंग है, नॉन लिविंग है,
दैट मीन्स दोनों बीइंग है, कुछ तो कॉमन था तभी तो दोनों ने डिफरेंट किया, दोनों बीइंग है ना, बीइंग एंड नॉन बीइंग, सो बीइंग लिविंग बीइंग, नॉन बीइंग लिविंग बीइंग. ओके, सो point is all the difference, yes, very good, all the difference can only be difference only when there is some underground similarity, or in the same way all the changes will be changes or would be perceived only if there is something beneath or something as underground background permanent. This is here may not be there. Please think from this point of view. You cannot know something but with substance and quality. समझ में आया मैं क्या बोला अभी लास्ट स्टेटमेंट? उसके कुछ क्वालिटीज होंगे. ये ऐसे ऐसे मैंने इसलिए किया क्योंकि ये चेंज होता रहता है, राइट? ये समझने के लिए बस ज्यादा उसको सीरियसली मत लेना. क्वालिटी है एंड ये क्या है? सबस्टेंस है. So substance is something that sustains the change. Sustains means it sustains itself throughout the change. Like mango. Classic example is, best example to understand is mango. Green, yellow, orange, black. Right? Now, so whatever this part is made up of is essential, right? Already discussed this. And whatever the other part is made up of is accidental. Now, essential means it is essential for that particular thing to be called that particular thing. Otherwise, mango का tomato हो जाएगा. So, this is called essential what? Attributes or whatever. It is called attribute basically. So it is substance has attributes. Normally, okay, I'll tell you one. There is little confusion here. Normally, guna means what? Normally, quality. But in Indian philosophy, 2-3 places, guna is actually used as essential quality or essential quality भी नहीं, essential. एक जगह पे वो क्वालिटी करके भी यूज हुआ है. ठीक है, तो सी जनरली इंग्लिश में क्या वर्ड होता है? एक होता है क्वालिटी और दूसरा होता है एट्रीब्यूट्स. उसको दूसरा भी वर्ड है कॉन्स्टिट्यूएंट्स. सो क्वालिटीज क्या होती है? एक्सीडेंटल. एंड एट्रीब्यूट्स एंड कॉन्स्टिट्यूट्स क्या होते हैं? इसेंशियल. ठीक समझ में आया? Normally, attributes, constituents, normally they are not called gunas. So, as I said, Sankhya also calls attributes only as gunas. Same is the case with this fellow also. So, Jainism क्या करता है? अभी देखना अच्छे से. Substance तो substance है. Substance को बोलते हैं द्रव्य. क्या बोलते हैं? द्रव्य इज सब्सटेंस. नॉर्मली भी हम वही इस्तेमाल करते हैं केमिस्ट्री वगैरह में. सब्सटेंस है तो हिंदी में उसको द्रव्य बोलते हैं. लिक्विड सब्सटेंस द्रव बोलते हैं. ठीक है, सब्सटेंस इज द्रव्य. सो वॉट एवर दिस इसेंशियल थिंग्स इट इज मेड अप ऑफ, इसेंशियल थिंग इज कॉल्ड गुण. And second is
क्वालिटी इज कॉल्ड पर्याय। ये बस याद रखना, गुण पर्याय, गुण पर्याय। दिस इज जैनिज्म। तो द्रव्य गुण पर्याय। इंग्लिश बताओ इसका, चलो, सो दैट यू रिमेंबर। जैनिज्म में इसका इंग्लिश बताओ। बताओ इंग्लिश। वेरी गुड। द्रव्य, वेरी गुड। ओ सॉरी, सब्सटेंस, सॉरी, हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। In Western, just addition I am saying, there is something called modes also. Modes, mode, MOAD, mode. तो वो क्वालिटीज का भी और टेम्पररी वर्जन है, वो बाद में देखिए। मतलब ये एकदम परमानेंट एक चीज है जिसके ऐसे एट्रीब्यूट जिससे ये बनती हैं, ये थोड़ा सा एक्सीडेंटल होते हैं, एक्सीडेंट आज है कल नहीं है। और मोड तो उसको कैसे आप देख रहे हो उसके हिसाब से भी चेंज होते हैं, तो अलग थोड़ा सा फॉर्म हो जाता है। अभी के लिए इतना याद रखो, सब्सटेंस एट्रीब्यूट क्वालिटी, सब्सटेंस एट्रीब्यूट क्वालिटी, ये हमेशा इंग्लिश में लेकिन कंफ्यूज नहीं करते वो लोग। सब्सटेंस एट्रीब्यूट क्वालिटी, इधर क्या है? राउंड बोल रहे हो, राउंड, हाइट, लेंथ, वो कहाँ आएगा? वेरी गुड। और क्या क्या आएगा? स्मूथ, 1 kg, आप तो बायोलॉजी में चले। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? ये समझ में आया? It is essential of apple. It's a constant class character of that particular thing, na? Like for example, you say it is round. Okay, बीच में काट दे तो एप्पल नहीं रहेगा, राउंड तो है नहीं वो, तो essential कैसे होगा वो? It still has some appleness, we don't know. That's why it is very metaphysical. और ये चीज को कोई भी साइंटिस्ट जो है अभी तक काउंटर नहीं कर पाया है, क्योंकि ये हमारे यहां से निकलता है। एंड साइंटिस्ट भी कितना भी वो वेरी सब्सटेंस, टेल मी वेरी सब्सटेंस और समथिंग लाइक दैट, बट वो चीज कभी भी नहीं एक्सप्लेन कर पाते कि सब्सटेंस एप्पलनेस। तो लाइक फॉर एग्जांपल एप्पल कटा हुआ है, एप्पल इसका वो आईपैड वाला एप्पल, ये भी तो एप्पल ही है ना? क्यों? कहां से राउंड है ये? इसको मैं तो किडनी बोल दूं, फिर भी ये एप्पल क्यों है? बिकॉज इसमें कुछ तो एप्पलनेस है। क्या एप्पलनेस है? यही तो पूरी फिलोसफी का। तो अभी के लिए बस मान के चलो कि कोई ऐसी चीज जिसमें वो होती है तभी वो चीज को वो बोलते हैं, उसको नेस लगाओ। तो गौत्व कांस्टेंट क्लास कैरेक्टर है उसमें, कुछ तो कांस्टेंट क्लास कैरेक्टर। तो ये, और ये इसना मैंने इतना टाइम इसलिए लिया बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर थ्रू आउट योर पेपर 1।
बिकॉज सब्सटेंस जिसको समझ में आ गया उसको फिलोसॉफी का 60% समझ में आया। आई वुड एक्सपेक्ट कि आप सब्सटेंस पे और सवाल पूछो, क्योंकि सब्सटेंस का कल क्लासिफिकेशन वगैरह। सब्सटेंस एक्चुअली कहाँ है फिर? यही तो सब डिबेट है। लेकिन आप बोलेंगे सर सब्सटेंस, ये तो समझ में आता है कि एप्पल, एप्पल इनसाइड द एप्पल देयर इज रेडनेस, उधर वो एप्पल स्वीट है, ओके, उसमें अंदर शुगर है। दैट्स हाउ साइंटिस्ट फिजिकल साइंस माइंड थिंक्स, राइट? उसमें राउंडनेस है। एप्पलनेस कहाँ है? एप्पलनेस करके इधर है। ये यहां तक तो समझ में आता है कि दिस इज द बेसिक वे यू लुक एट एप्पल। यू कैन नॉट look at apple without appleness in sense. Otherwise, what is the difference between looking at something red, then another something round, then another something sweet? We all three put together will call it apple? No, because they are having qualities. Like there is red color, a red poster, or something red, just like that. There it is something round, there is something sweet, there is something this, and you try to cover all these things together. Will you call it apple? Why? Nothing has appleness. It has redness, it has sweetness, it has everything, but it is not. So where is the appleness? Physically you cannot show. That's why it is metaphysical, not mental. Now if it call you mental, then it's like, okay, then it's not philosophy, then it's psychology. Philosopher will say it's not in just my mind, it is metaphysically present, it is there in every apple. Okay, कुछ क्या, वो बर्कले के समय देखेंगे, अभी बस समझो. More important is understanding in the class, more important is revision and content and mugging up when it is about revision. क्लास में सोचो, every apple seed is a dicot. ये क्या है dicot? हाँ, okay, monocot dicot वाला, okay. Can we consider it as a substance? See, again, everything is a substance as long as you are naming it separately. Seed is also substance. Why? Now forget about apple. Now focus on seed. Can everything that looks like that you call seed? Something is seed. Something can be tablet. And tabletness and seedness are different things. And seed and roasted seed is different thing. We have an idea in our mind. And seed has, like seed of apple and seed of watermelon is both called seed. Why? They are absolutely different than each other. Some seedness in there. Seedness means seedness. Because if you start explaining that, I mean, can it be an attribute of apple fruit? No. Seedless apple. See, attribute is something without which that thing cannot be called that thing. He is saying seed of apple is attribute of apple. No. There are seedless apples. What are you talking about? Or if I remove seeds very carefully and give it to you, would you call it, this is not apple? Why? Seed is not there. You will still call it apple. Why? It has this quality removed out. One of the thing is removed out. Even I am saying, I give example of this man, forget about seed. But quarter of the apple is eaten up by someone. Still it is called apple. The company name is Apple, yeah, come on. And they call it this apple. Is it apple? It is. Why? See, इसने तो पूरी फिलोसॉफी की किताबें भरी हुई हैं, ये एप्पलनेस, काउनेस ने, ये तो सबको समझ में आता है. ये भी सबको समझ में आता है, जो सब्सटेंस को एक नाम दे दिया. But what it has is appleness. So without appleness, there is no apple. Without seed, there can be apple. And this is very, very crucial
just a minute. Very, very crucial, because this substance thing will eat your head like anything in Western and Indian also. Now you understand everything. And by the way, what's the difference between apple and appleness? You will say same ही तो है. नहीं. Apple is about this substance. Appleness is about, apple is about this substance. Appleness is class character. This appleness can be present in other apple also. So apple 1, apple 2, apple 3. Now these three things are different. Like if you eat apple 1, apple 2 is still there. But appleness as a constant class character is everywhere in all the apples. So appleness is that essence. Appleness is Tua. Appleness is constant class character. You are asking something? No. Attributes here means essential attributes, by the way. That's why the word attribute is sometimes used, sometimes they say essential. Reverse बोल सकते हैं. Substance नहीं तो attribute नहीं. अगर apple ही नहीं तो apple नहीं. That's what. See, substance is the starting point. That's why I said what's the difference between the two. Substance is basically a thing. Identifiable, distinguishable something is called substance. So you can call this chairness, no problem. But chairness, you cannot call this chairness, because then this is also chairness. So what's the difference between the two? Difference is, this is chair number 1, chair number 2, discernible, distinguishable hai, tabhi to difference hai. And that's how our knowledge system perceives things. So where is substance? According to this, there is substance. Again, substance is not here in that way also. It is created by here, but substance is something that this sees in that. है तभी दिखेगा, and ये है तभी दिखेगा. नहीं समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो उधर है थिंग इन इटसेल्फ, अपने आप में है. We try to know it through qualities, but we don't reach. वो जैनिज्म, ये जो सब्सटेंस में बात कर रहा हूँ, इसको अभी जो बात कर रहा हूँ, जैसे ये, इसको जैनिज्म से अभी कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है. जैनिज्म भी वही बोलते हैं लगभग, बट वो शायद बात मत सोचो, अभी बस सिंपल सोचो. सब्सटेंस मीन्स व्हाट? दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. Substance is something that this is able to perceive in that. समझ में कहाँ है सब्सटेंस? सी, वो भी अलग अलग उसकी थियरीज है कि एप्पलनेस यहाँ होता है या वहां होता है. इसकी भी अलग थियरीज है, दैट विल सी लेटर. क्योंकि ये तो पता चल रहा है कि चूंकि बिकॉज दिस इज देयर, is able to see everything in like that. But can you see something which is not there? So when you have a heat camera, what do you see? Red, yellow, orange, orange. Heat camera? You don't know heat camera, temperature camera, thermo camera. He doesn't seem to be knowing it. No, you don't know. You might have seen it. Like that night vision also. Like it just gives picture of the temperature. Heat means temperature. You might have seen it. Come on. So, where is the temperature? Scientifically, body. But now, why I am not able to see it now? वो camera नहीं है. So now tell me, if without camera I am not able to see, and with camera only I am able to see, where is the temperature? So temperature is something which is there and can only be seen through this camera. Like that, reality is there which can be seen through this epistemology, knowledge system. So like that, substance is there, I am able to perceive it. ये basic simple वाला system इसको कहते हैं realism.
दैट इज थिंग्स आर आउटसाइड द माइंड। रियल में रियल है उसीलिए देख पा रहे, बाद में उसके खिलाफ होता है आइडियलिज्म, वो देखेंगे कि कैसे। ठीक है, सब्सटेंस समझ में आ गया। आस्क मी एनी डाउट अबाउट सब्सटेंस। कल फिर देखेंगे सब्सटेंस को क्या करना। Any doubt about substance? Otherwise, lecture is over. And I think everyone should ask one question before closing on substance, because very, very crucial. Any either substance question or some comment in the form of what you understand. Everybody has to speak, including Mukesh and you people. Who will start? Substance, okay. Attributes cannot be described. Did I mention that? Attributes can very well be explained, described. For example, appleness. So who said it cannot be described? I described, no, it is appleness. Okay, then you, okay, what is, you'll ask what is, you'll ask appleness. Yes, appleness is the common class character found in every apple. I described. So how can you say that appleness cannot be described? हाँ, उसका रिलेशन है, एक नहीं है, अभी के लिए इतना समझो, क्योंकि सिद्धांत और स्टूडेंट एक ही है लेकिन एक नहीं भी है। एक पर्सपेक्टिव से आप स्टूडेंट हो, दूसरे पर्सपेक्टिव से आप सिद्धांत हो, तीसरे पर्सपेक्टिव से आप बेटा हो, चौथे पर्सपेक्टिव से आप दादा हो। थिंग वही है, पर्सपेक्टिव तो बदल जाता है। वैसे सब्सटेंस के रिलेशन में कुछ भी देखोगे तो क्वालिटीज की बात होगी तुरंत। सब्सटेंस है मीन्स क्वालिटी है। सब्सटेंस कैन बी विदाउट क्वालिटीज ऑल्सो, बिकॉज इन इटसेल्फ वो अलग फिलोसॉफिकल लेवल है, बट क्वालिटीज कैनॉट बी विदाउट सब्सटेंस, दैट्स द पॉइंट। They cannot be just red. Red what? Anything that you know that it is red but it is not. Tell me anything. Red कुछ नहीं आ गया, ऐसा कुछ है ही? Yes. Tell me sweet what? Sweet apple only. Without द्रव्य, हाँ, बट विदाउट, सी वो अलग बात है कि उसको किस तरीके से कैसे होगा, बट सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो बहुत बार ऐसे देखिए एट्रीब्यूट्स नहीं है तो सब्सटेंस नहीं है, यस, बट सब्सटेंस नहीं है, एट्रीब्यूट भी नहीं है। तो सिर्फ एप्पलनेस का आइडिया होना एप्पल होना थोड़ी है। वो रियलिस्टिक होगा तभी तो, उसमें अलग अलग थियरीज हैं। प्लेटो विल से, वो तो वेस्टर्न में तो और डिस्कस होता है, बट न्याय पे भी डिस्कस होता है। हाँ, तीनों चीजें हैं, रियल है, आउटसाइड, सी बिकॉज रियल, हाँ रियल भी है, बट आउटसाइड माइंड है, इनसाइड माइंड है, इन बिटवीन है, इसकी अलग अलग थ्योरीज, बट है तो जरूर, क्योंकि वो नहीं है तो फिलोसॉफी का दुकान बंद हो जाएगा पूरा। आप अगर बोल देंगे एटम ही नहीं है तो फिजिक्स की दुकान बंद हो गई, एंड फिजिक्स की पूरी दुकान ही एटम पे चल रही है। अगर आप बोले कि 2+2=4 नहीं है, नंबर्स ही नहीं है, तो मैथ्स चलेगा कहां से? What is now? Otherwise, what is 2? Tell me. 2 is also, 2 is actually a abstract concept. It's a concept. 2 is not number. It's just a concept. Tell me, can you show me 2? You can show 2 chairs, but you cannot show me 2. So if I ask what is appleness? Appleness is the common class character found in all apples. It is the essential characteristic or essential property of apple. So it is appleness. So what is 2? If I ask you what is 2? What is 2? What is 4? Number. What is number? So philosophy is like this. First define what you mean.
Yes, very good. No, this is very important. At least you say it is a concept. Concept of what? It is used for counting. Concept of measureness. No, measureness. So measureness क्या होता है? So see, 2 is number. I would say 2 is a symbol. 2 is an indicator of what? Which has that abstract value, which I have only given. Otherwise, for dogs and elephants, there is no 2, 3, 4. There is only less, more, and less and more. Why? Because I wanted to establish something called mathematics. So I invented 1, 2, 0, 10, 15, and I am not talking about the decimal system or anything of that. Any system for that matter. Decimal, तो we accept it. It could have been hexadecimal or whatever, hexa, octernal, whatever it is. Octagonal, जो भी होता है वो term, I think. Decimal, octimal, जो भी होगा मुझे याद नहीं अभी. तो hexadecimal होगा. So that's not important. What you are talking about is it's a process of identification. Identity means individualize that thing from others. It is one. When you say, is this chair one? How much is this? 1 finger. This is. Now, why this is 1? Because there is a fixed boundary that you conceptualize. How many fingers are this? Like, how many is this finger? You are not able to see, for example. 1. Okay, these are 4 fingers, but how many hands? Why? Because the conception of hand is conceived together as one. This is finger as, but it still has 3 parts, but still you are calling it 1. Why? So as a finger, away, like completely or togetherness, it is 1, but otherwise it has parts. So the concept of identity is very, very important in philosophy. उसको बोलते हैं individualization. So you individualize something as one. Individualize समझ में आ गया? Distinguish that one from others. So there is this finger and everything else is, this is pen. That means everything in the world is non-this pen or non-pen. I mean, there are pens, but this pen means this is separated in the sense of identifying. So did you identify this pen? Yes. You separate it from rest of the world. This is kind of, individualization, identification of that. This is philosophy. And what we are discussing now, it's going to be there throughout the Indian and Western philosophy, paper 1. This is core philosophy, what we're talking about. If you see, philosophy has nothing, this substance, samanya, dravya, I mean substance, guna and all stuff. Soul, again it is related to the same. What is soul? Like it has penness. What this has is soul. So normally we also say that वो person अभी वो नहीं रहा, उसकी आत्मा मर गई पूरी, वो अलग ही हो गया पूरा. He is no more the same person. Means उसकी तो आत्मा, उसकी जान ही चली गई, उसकी पूरा सोल ही निकल, soulless हो गया उसका, dead body है वो. Means what? The essence of that thing is gone. That's why religion में soul is taken as essential. So it's because that's how the philosopher looks at everything. Where is the substance? What is the quality? What is permanent? What is temporary? What is essential? What is accidental? Every philosopher looks at those things. Now, what do you mean by substance? Definition different. Thodi. Ultimately, sabka, if you see somewhere, this chair is a substance, yes. And is this a blue substance? Yes. It has chairness, yes. ये सब एग्री करते हैं,
बट चेयरनेस दिमाग में है, बाहर है, ये वो अलग अलग। ठीक है, तो सब्सटेंस इज वेरी वेरी क्रूशियल। जिसको सब्सटेंस समझ में आ गया उसको फिलोसफी समझ में आ गया। जिसको कॉमन क्लास कैरेक्टर, सामान्य, इसेंस, आत्मा, ये चीजें समझ में आ गई, नॉट इन द टिपिकल वर्ड दैट यू नो आत्मा, नॉट लाइक दैट, जस्ट टेक इट फ्रॉम लाइक दिस, आत्मा इज इसेंस। सो लाइक फॉर एग्जाम्पल, पेननेस इस थिंग का आत्मा है, पेननेस इज एन इसेंस ऑफ दैट पेन, आत्मा इज इसेंस। हम वो आत्मा वो नहीं लेते कि यहां से ऐसे लाइट जैसे जाता है, उसको नहीं, वो कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे हम बोले ना कि बहुत सारे देयर आर डिफरेंट वर्ड्स, the ego is the word that you take in different source, but here it is taken in different, self is taken in a different sense, like that atma is taken in different sense। otherwise atma means something जो मरने के बाद ऐसे हवा से उड़ जाता है, वो आत्मा ऐसा नहीं। ठीक है, डन, समझ में आ गया सब? अभी घर जाके सोचो, सबको पूछो, नेट पे भी थोड़ा ढूंढो क्या सब्सटेंस होता है, और अगर नहीं समझ में आया, व्हाई? बिकॉज दिस इज द बेसिस ऑफ। कल मैं पूछूंगा सब्सटेंस के सवाल। तो सब्सटेंस इज कांस्टेंट एंड एग्जैक्टली, मुकेश ने मस्त जाते जाते ये किया, सब्सटेंस इज कांस्टेंट, सो सब्सटेंस इज कांस्टेंट, क्वालिटीज चेंज, यस, व्हाट चेंजेस इज क्वालिटीज, व्हाट डजंट चेंज इज सब्सटेंस, एंड सब्सटेंस इज सब्सटेंस बिकॉज इट हैज, यस, ओके।